हाय गाइस माय नेम इज़ महेश शर्मा और ये मेरा यूट्यूब पे एक्चुअली फर्स्ट वीडियो है। मैंने यूट्यूब में काफ़ी कंटेंट्स देखे। उसके बाद मैं भी थोड़ा मोटिवेट हुआ कि मुझे भी कुछ कंटेंट बनाने चाहिए रिलेटेड टू फाइनेंशियल मार्केट, रिलेटेड टू एआई, स्टॉक मार्केट, जहाँ पे मेरा बेसिकली इंटरेस्ट है। आई नो अभी सिचुएशन काफ़ी वर्स्ट चल रही है। बेसिकली सभी को फियर है दैट एआई माइट टेक ओवर आवर जॉब्स और पता नहीं क्या होने वाला है। और हम ऐसे इवोल्यूशन से काफ़ी देर से गुजरे हैं, जब से हम पैदा हुए हैं एक्चुअली। आई थिंक ज़्यादातर हम में से 90s के किड्स हैं जिन्होंने वॉकमैन से शुरू किया था, जो हमारे पहले गैजेट्स हुआ करते थे। स्लोली वी मूव टू सीडीज एंड देन to normal Nokia phones and then move to smartphones. हमने सारा इवोल्यूशन देखा है। अब नेक्स्ट इवोल्यूशन है एआई इवोल्यूशन, जिससे हम सब डर तो रहे हैं, बट एक्चुअली में अगर हम मोटिवेटेड और एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से सोचें तो हम अगर इस एआई से फेमिलियर हो जाएं तो ये कोई ऐसा इतना बड़ा कोई जिन नहीं है जो एक्चुअली हमें खा जाएगा। बट ये हमें काफ़ी कुछ चीज़ें सिखा के जाएगा। ये हमें काफ़ी कुछ चीज़ें सिंपल भी बना रहा है। आज मैं एक्चुअली काफ़ी स्क्रॉल कर रहा था, तो आई गेट गोट टू नो अबाउट मल्टीपल एआई टूल्स रिलेटेड टू जनरेटिव एआईज, जो एक्चुअली हम एक डेटा एनालाइज करने में तीन तीन चार चार या हफ्ता, 2 हफ्ते, दिन लगा देते हैं। वो एक्चुअली मिनटों में या एक बटन क्लिक करने से सारा जनरेट हो रहा है, विच इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी। आपको भी लगेगा आई गेस। चलो, आई लेट आई गिव यू a view about one of the tool that I have came across recently, which is notebookalum.google.com. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। आई हैव वर्कड इन एफपीएन एंड कंट्रोलिंग फील्ड, जहाँ पे हमें काफ़ी डेटा क्रंचिंग, डेटा रिपोर्टिंग और समराइजिंग करना पड़ता है, उसके कंसाइज नरेटिव्स बनाने पड़ते हैं, उनको डैशबोर्ड और रिपोर्ट के थ्रू शो करना होता है। तो बेसिकली इट्स रियली टाइम कंज्यूमिंग। और एक्चुअली हमारे पास डेटा की भी काफ़ी इश्यूज रहते हैं कि हमारे पास एडुकेट डेटा नहीं रहता, या हमें वेबसाइट्स नहीं पता कि कहाँ कहाँ से हम अपना डेटा कलेक्ट करके उसको एनालाइज कर सकते हैं और उसको एक एग्जीक्यूटिव समरी या इंसाइट बना के जो कि हम जिसको हम लॉजिकली वैलिडेट कर सकें थ्रू डेटा, और जिसको आगे हम फर्दर प्रेजेंट कर सकें। तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, इसमें काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं, काफ़ी वेबसाइट्स हमें गो थ्रू करनी पड़ती है, और अल्टीमेटली जो भी डिटेल्स हम बनाते हैं हमें कॉन्फिडेंट होना पड़ता है कि वेदर दिस इज गुड टू बी प्रेजेंटेड टू द सीनियर लीडरशिप और नोट। तो इसके लिए हमें 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 जितना एफर्ट्स करना पड़ता था, जितने रिसोर्सेज हमें रिक्वायर्ड होते थे, उसके हिसाब से, उसके कंपैरिजन में अभी तो बिल्कुल इतने रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी। विच आई केम अक्रॉस विद दिस नोटबुक एलम। इट्स क्वाइट फ्री एक्चुअली। तो इसमें हमें कुछ प्रॉम्प्ट्स इंक्लूड करने पड़ते हैं। बेसिकली प्रॉम्प्ट हम बोलते हैं, जैसे हम किसी भी पर्सन को मिलते हैं उसके बारे में जानने के लिए हम पूछते हैं कि अब आपके बारे में बताओ, आपके डिटेल्स बताओ, वे आर यू कमिंग फ्रॉम, व्हाट यू हेडिंग टू। तो उसी हिसाब से हमें प्रॉम्प्ट्स अपने सर्च में इंक्लूड करने पड़ते हैं टू गेट टू नो कि हमें किस तरीके का डेटा या कंटेंट चाहिए। बेसिकली हम इसमें कुछ भी चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं। इट्स नॉट जस्ट नॉर्मल लाइफ थिंग्स जो भी हम चाहते हैं। इवन वी कैन check about the economy of any country or stock market, investment prospect,
invest companies result, what companies are focusing into, sub any detail we can take it handy through this website basically. तो इसके लिए हमें जो प्रॉम्प्ट इंक्लूड करने होते हैं वो हमें केयरफुली इंक्लूड करने होते हैं बेसिकली। काफ़ी पर्सन्स तो वो प्रॉम्प्ट्स राइट करते हैं, बट एक्चुअली में आई हैव डिज़ाइन माय सिस्टम इन सच ए वे कि मैं बोल के अपने प्रॉम्प्ट्स इंक्लूड कर सकता हूँ। आई गिव यू द synopsis. Yeah, so can you please include the data in which can you please give the details of Infosys company, how it's performing currently, and where it's heading towards. Give me financial results and the prospect for future. Basically why I'm saying is I want to invest around 30,000 for the short term horizon of 6 months. Is it good prospect more for me to invest in Infosys? So इसमें कुछ मैंने एक्स्ट्रा बोला तो वो इंक्लूड हो गया, आई जस्ट डिलीट दैट। Sorry. Okay, there is a typo error for Enforce. Actually, I required details for Infosys company, how it's performing currently and where it is heading. Give me financial results and prospect. Basically, I'm saying yeah. So I have given the prompt for whatever the requirement I have. देर आर टू ऑप्शंस बेसिकली कि एक वेब का और एक ड्राइव का। ड्राइव बेसिकली इट सर्च फ्रॉम माय ओन ड्राइव, गूगल ड्राइव, बट आई नीड रिजल्ट फ्रॉम द वेब। और मुझे फास्ट रिसर्च चाहिए। दी देखो इसमें दो ऑप्शंस है बेसिकली, डीप रिसर्च और फास्ट रिसर्च। डीप रिसर्च में इट विल टेक टाइम, इट विल गो डीप डाइव to all the prospect website and then search the data and give the outcome. But we need the details for the fast research. So I will click on fast research and click on search data. सो बेसिकली व्हाट इट डूज कि ना ये हर वेबसाइट जो भी हमारे गूगल सर्च इंजन पे अवेलेबल है ये सब पे देगा, दिखाएगा। इफ आई कैन मेक इट विड्थ इसकी बढ़ाऊं तो यू कैन सी इन द थंबनेल it's going by different website like Times of India, Business Standard, Infosys website, and it goes by all the websites which are available to him. बेसिकली इसमें हमें कुछ अपने एफर्ट नहीं डालने, नोटबुक एलम सब अपने एफर्ट्स अपने आप डाल रहा है और एंड इट इज गिविंग अस द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स. So we need to import all the details. We need to wait for all the data to get imported. तो जैसे ही ये सब इंपोर्ट कर लेता है इट गिव्स अस द रिजल्ट्स. इसमें कस्टमाइज का भी ऑप्शन है इफ यू वांटेड टू इंक्लूड एनी डिटेल्स. सेट कस्टम समरी, या वी कैन on the custom summary as well. Any message we want to add, so all we can do it. Basically it has given us the summary about the Infosys company. Recently financial report and market analysis indicate a volatile volatile period for Infosys and the broader Indian IT sector, despite achieving a 21% increase in net profit for the final quarter of 25-26 year. The company stock price experienced a sharp 6.75% decline. This turnaround is largely attributed to conservative revenue guidance for the upcoming year and reduced in discretionary spending. So basically, it is giving the details that despite achieving the 21st 1% of increase in profit, it's still getting decline. Uh,
इसमें बेसिकली हाउ डिड द एक्सेंचर गाइडेंस इम्पैक्टेड, ये डिफरेंट प्रॉम्प्ट हमें बता रहा है कि किस किस हिसाब से हम सर्च कर सकते हैं. आई वॉन्ट टू एड अ प्रॉम्प्ट ऑन दैट. Hi, just wanted to check if I had a investment requirement. I wanted to invest around 30,000 INR in Infosys company for next 6 months. Whether it is a good prospect for me or should I restrain for investing in Infosys? So after including the prompt, I will click on search button and it will give us the required answer. Let's see क्या details देता है हमें. Based on the sources, investing 30,000 in Infosys for next 6 month horizon present a complex outlook characteristics characterized by significant short-term volatility but potential for recovery for current multi-year lows. As the stock price is trading at having a recently dropped nearly 7% in a single day. Whether this is a good prospect for you depends on the tolerance for your cautious sector environment versus your interest in buy on dip opportunity. बेसिकली ये बता रहा है कि ये तो आप पे डिपेंड करता है, बट ये एक चीज उसने बताई है कि जो स्टॉक है वो अपने ऑल टाइम 6 ईयर लो पे है. सो इट्स गुड टू बाय ऑन डिप बेसिकली. और शॉर्ट टर्म इसका आउटलुक जो है, एक तो वीक गाइडेंस है बेसिकली. Previously it was giving a guidance that year on year इसकी जो revenue growth होएगी it would be around 3 to 5. Now it has reduced to 3 to 4. Basically at low side it could be 3 and higher side it could be 4. So guidance low होने की वजह से basically जो weakness आई है stock में वो reason है. Other than that there is a weakness in nifty it index. Actually जो भी it stocks हैं that all depends on nifty it index. Since Accenture has given the uh, weak guidance, it has impacted Infosys. Even though जो Accenture है वो big company है compared to Infosys, but Infosys is a like IT giant in India. So basically जो 3 to 6 month का horizon है उसमें majorly जो analyst firm है they are giving the mixed reaction of hold the uh, stock between 3080 to 1480 target for next 3 to 6 months. uh, it totally depends on the brokerage funds where they think the stock will be heading towards. But जैसे नमूरा बता रहा है कि इसने टारगेट दिया है 1640 का एंड जे एम फाइनेंशियल ने टारगेट दिया 1660 का. और इसकी एक्चुअली में काफ़ी लार्ज डील इसने विन किए हैं. और इसकी रेवेन्यू ग्रोथ हालांकि स्लो है बट एक कंसिस्टेंट ग्रोथ है. इट्स नेवर बीन इनटू लॉसेस. सो इट इज़ अ गुड प्रोस्पेक्ट which this notebook LM is saying. जो रिस्क है वो भी बता रहा है कि क्या क्या रिस्क आगे आने वाले टाइम में हो सकते हैं विच कुड इम्पैक्ट इट्स ग्रोथ. सो बेसिकली ये समरी टेबल भी बता रहा है. पोटेंशियल 12 मंथ कंसेंसस जो है वो बाय के हैं. It will go around 1900, and in worst case scenario, negative scenario, it could be around 1100. सो बेसिकली ये चीज़ें सब इस पर डिपेंड कर रहा है. और कंक्लूजन है कि इफ़ यू रिक्वायर द मनी इन एग्जैक्टली 6 मंथ कैन नॉट अफोर्ड एनी लॉस देन डाउन साइड इसका डाउन साइड मोमेंटम है एंड यू might want to restrain or look for other sector. However, if you're looking for the premier company at a reset valuation, you can
hold the volatility, many analysts still view Infosys as a top pick. So basically, mixed reviews, and you can go by your own analysis in that. But the actual case is this AI software is actually providing us the required information, taking from multiple websites, so that कि हम एक डिसीजन ले पाएं. I will give you the other feature of the AI tool. Basically, we can create podcast out of it. If we just click on this button, and it will automatically include the audio versions of it. We can also create uh, PowerPoint presentations, dashboards out of it, which could be quite helpful for us, and keep us, if we want, we can make it handy to us जब भी हमें requirement होगी to analyze. I give you one of the example. This is a strategic market assessment which I am clicking on right now. तो ये अपने आप से रिपोर्ट खुद से ही जनरेट करता है. It also gives a flashcards. It's also create a slide deck और डेटा टेबल. मतलब हर चीज अवेलेबल है इन एआई टूल्स में, which is quite surprising और quite helpful for me actually. मैं खाली कंपनीज के रिलेटेड ही डेटा कलेक्ट नहीं कर सकता. आई कैन ऑल्सो डीप डाइव ऑन अदर आइडियाज. बेसिकली उन आइडियाज के अंदर भी डीप डाइव एनालिसिस कर सकता हूँ मैं, एंड देन क्रिएट न्यू रिक्वायरमेंट्स, और जो भी उसके हिसाब से है आई कैन स्टिल मेक द थिंग्स वट एवर द रिक्वायरमेंट इज. कुछ चीज़ें अभी रेडी हो चुकी हैं जिसको मैं क्लिक करके देखता हूँ. सी, it has given me a quick forecast on Infosys share. ये बता रहा है कि जो करंट शेयर प्राइस है इट इज 1051.40. जो टारगेट प्राइस है इट इज 1300. नेट प्रॉफिट जो जनरेट कर रहा है इट्स 29,474, और रेवेन्यूज एक्चुअली 1,78,650 है. जो पीई रेशो है दैट इज सिग्निफिकेंटली डाउन, विच इज लेस देन 15, and dividend yield is around 4.5, 2.4 to 4.5. So analysts are saying that they are giving a strong buy for that. हालांकि cautious है कि IT segment is down, but still they are giving a buy ratings to Infosys, which is quite interesting. Okay, let me see another report. ये strategic market assessment है basically. इन सबको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में या फिर एक्सेल शीट में, which is quite helpful actually. Oh, it has given me the whole detail of market assessment related to Infosys या IT industry. I'm just scrolling here. You can stop the video in between and read everything if you require. I'm sorry, I was reading also in between. इट इज़ एक्चुअली क्वाइट इंटरेस्टिंग. इसने पूरे थीसिस बना के दे दिया. मार्केट स्ट्रेटजी असेसमेंट है विच कुड बी हेल्पफुल while टेकिंग एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन. आई ऑल्सो लाइक इनिशियली जो थोड़ा सा रीड किया है आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग. ओके, फ्लैश कर व्हाट इट इज एक्चुअली. ओके, वाओ,
दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. ओके, यहाँ से जाना है. There are 60 flashcards. What was the initial capital investment used? Okay, see the answers. Okay, so basically यहाँ पे हर एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके corresponding आंसर दिए हुए हैं, सी आंसर्स. सो if you wanted to have uh, detailed information about Infosys, you can also get the detail out of it. शेयर प्राइसेस ये हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिया है. Let's wait for other two requirements. It's still getting generated. तो यही चीज़ है बेसिकली. वट एवर द डिटेल्स वी रिक्वायर. जैसे मैं पूछ देखना चाहता हूँ, व्हाट डज अ रेंज बाउंड आउटलुक ऑफ 1380 एंड 1480 मींस फॉर मी. सो let me check how it takes the question and what would be the outcome of it. Okay, for a period without a sustained upward and downward continuation, there has been specific implications. Short term stagnation, it could be the case कि वो prices वहीं पे ही stuck रहें. सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पूरा ध्यान रखना चाहिए. सपोर्ट इज अराउंड 1380 एंड रेजिस्टेंट इज 1480. ओके, पोटेंशियल रिटर्न. So it's giving the strong guidance about the little details or granular detail about the Infosys company. So we need not to go into these kind of different websites to learn about how Infosys is performing. We just need to read, generate the data based on the details available. We can ask multiple questions uh, from the bot, and it will keep giving us the required answers. So काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये AI टूल, एंड आई विल श्योरली recommend this tool to you. Basically, it's still generating the audio podcast and the slides. I still have to give some time on this. Which quarter result should I watch for market clarity? What does downsize momentum of a hawkish US Fed means? Yeah, so we can ask multiple questions. How do US affect Indian IT system, which is a quite interesting question, because all the IT sector of India is driven by US IT. So basically, it is an important question to us. It's give us a deeper knowledge about how the US market impacts the Indian market precisely. The most importantly impact on investment following an announcement on 26% US reciprocal traffic tariff on April 2 was a sharp exit by the foreign investor. So basically तभी actually एक IT का फॉल आया था, जब हमारे पर ट्रम्प के द्वारा 26% का टैरिफ्स लगाए गए थे. और एक्चुअली में जो एआई का रीज़न है इम्पैक्ट इंडियन मार्केट को करने का, वो ये है कि जो ये एआई टूल्स हैं उसके लिए हम अभी रेडी नहीं है. बेसिकली हमें एक्चुअली में अपना पहले माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि जो भी टूल्स आ रहे हैं हमें सीखने हैं. जैसे ही हम इन सब को सीख जाएंगे, इट विल गिव अस द रिटर्न वट एवर वी आर एक्सपेक्टिंग. ये देखो, ये एक पूरा डैशबोर्ड बना के दे दिया, जिसको हम फुल साइज में भी देख सकते हैं. ओह, इट्स गिविंग द फंडामेंटल्स एंड मार्केट पनिशमेंट. वाओ,
इट्स हैंड्स ऑन, जो भी हमारे डैशबोर्ड है वो हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है, जो कि आई गेस इम्पैक्टफुल बनाने में ची 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे आउट ऑफ टेकिंग ऑल द डेटास. वाओ. Top line, bottom line, margins, liquidity, everything. So everything is available in just click of button, so, which is quite interesting. Let's see कि अगर पॉडकास्ट भी होगी या पॉडकास्ट भी हमारी रेडी है. I will give you the glimpse of the Imagine increasing your podcast. net profits by nearly 21%, securing like almost $15 billion in massive brand new contracts, and then Watching your stock just completely crash. exactly, watching it drop to a 52-week low, it defies So every exactly, basic. basically ये हमें पूरी पॉडकास्ट बता रहा है. Even though if we are not a good reader, we can listen to these podcasts and get to know how the Infosys is actually performing, which is quite good and helpful. So I quietly recommend this application or this site to you for your AI learning. So thank you. Thank you for bearing with me. I will come up with another video soon, and hope you like and subscribe my channel to get the all the latest videos on new AI systems which I get across. And thank you, thank you for your help.